मेरा नाम कनिका है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। चलो, बात यहाँ से शुरू होती है कि 1989 में मैं पैदा हुई थी। हर पेरेंट्स की एक इच्छा होती है कि बेटा बेटी दोनों हो। मैं सेकंड चाइल्ड थी, बेटी। पर थोड़े दिनों बाद इनकी खुशी धीरे धीरे डिप्रेसिंग उसमें जाती गई, क्योंकि उन्हें पता लगा आई हैव अ प्रॉब्लम। चलो, मल्टीपल डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स हमने चेक कराया कि शायद इस प्रॉब्लम का कोई इलाज हो। नहीं, कुछ नहीं मिला हमें इंडिया में। इवन अब्रॉड भी हमने कराया, कुछ नहीं मिला। इवन धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम थी, इसका नाम है न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, ये अपने मल्टीपल डिसऑर्डर्स दिखाती गई। स्किन पे फ्रिकल्स आने शुरू हो गए। उसके बाद जब मैं पुबर्टी एज पे पहुंची तो बम्प्स आने शुरू हो गए। स्किन सेजिंग, जैसे सैग हो जाती है, वैसा वाला होता गया। 2014 में मेरी एक सर्जरी हुई थी। वो प्लास्टिक सर्जरी थी, पर उसका भी कोई मतलब वो नहीं दिखा कि जो इम्पैक्ट जिसे कहते हैं। थोड़े दिनों बाद वो भी अपना उस पे आ गया। तब मुझे किसी ने बोला कि मेदांता पे जाइए, वहाँ पे आपका ज़रूर हो जाएगा। तब मैं डॉक्टर P सिंह से मिली, दी न्यूरोसर्जन। उन्होंने हमें चीज़ बताई कि ये सर्जरी ऐसे होगी। इसमें रिस्क फैक्टर्स भी उन्होंने बताए थे कि रिस्क फैक्टर्स ये रहेंगे आपकी सर्जरी में। हो सकता है कि थोड़ा सा बॉडी में पैरालाइज भी आ जाए। आई वॉज इन दैट मोमेंट की एनजाइटी मुझे इतनी हो गई थी, अगर मैं पैरालाइज हो गई, टुडे आई एम इंडिपेंडेंट, मैं अपना काम कर लेती हूँ, पर उस समय बहुत एनजाइटी थी, अगर पैरालाइज होगी बॉडी तो कैसे काम होएगा, डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। आई डोंट नो क्या पार मुझे मिली, किस पार ने मुझे राइट डायरेक्शन में मूव कराया और मैं सर्जरी के लिए तैयार हो गई। इट्स वॉज 6 आवर सर्जरी। आई वॉज टोटली डैट इन दैट मोमेंट कि मैं अपनी मम्मा को यही बात बोले जा रही थी कि पता नहीं मम्मी मैं आऊँगी या नहीं आऊँगी, कि सारी जो भी बातें करनी है ना अभी कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं वापस भी आ पाऊँगी। So this young girl came to me nearly 6 months ago, and she entered the room and she had this massive swelling on the one side of the face. The eye was literally hanging out. It was not functional. She was blind in that eye, but it was looking really, really bad. The whole eye had come out of the eyeball and it was hanging down over here. And the whole skin was very large. There were large folds of skin and it was coming down and hanging like almost like elephant ears. So the diagnosis was obvious. This was what we called plexiform neurofibromatosis. Now, neurofibromatosis is a genetic disorder. It's an inherited disorder. The genes are abnormal, and therefore these patients get multiple tumors related to the nerves, arising from the nerves. Commonly, they could occur in the brain or in the spinal cord. Now, there is a particular type of neurofibromatosis which also involves the skin nerves in a particular manner, where they become not solid nodular tumors, but they become plexiform. They are soft, spongy tumors, and they increase to massive sizes, and when they increase, the whole skin becomes enlarged and it starts hanging down from the face or wherever it is. This commonly occurs on the face, and in her condition, it was arising from the fifth nerve or the trigeminal nerve, which supplies the sensation on the face. So this tumor had arisen from the trigeminal nerve, started inside the brain, was coming out under the skin, and because of the large size of the tumor and the spongy type of the tumor, there were multiple folds of skin which were hanging down, and underlying it there was the tumor. This genetic disorder is often associated with other abnormalities, and in her case one part of the bone was missing, and this was the bone between the brain and the orbit or the eyeball, and because of that the tumor which was inside the brain and outside the brain
what had come out through this bony defect was pushing the eye bone outside so that it came out of the socket and was hanging down. This posed a major challenge for us in terms of treatment, and the challenge here being to remove this tumor without producing any scar on the face, and also to isolate the orbit from the cranial cavity by putting in some sort of a titanium mesh, so that will block off the tissue from coming back into the and growing into the orbit again, while also allowing the vital structures from the orbit to pass into the towards the brain, which are the nerves, etc. It required a major planning, multiple meetings between the neurosurgical team led by Dr. P Singh and my own craniofacial team, which included a craniofacial surgeon and a maxillofacial surgeon. It also involved making computer aided models of the actual models of her skull and planning using that model to plan the operation, and also plan that how big a mesh we require and how we are going to isolate that. It involved an incision over the scalp, which would be hidden in her hairline, and then doing all the operation through that incision, removing the bone from the cranium, approaching the tumor from inside the skull, then excising the tumor, also removing the orbital roof and excising the entire tumor, whatever could be removed, because the part in the brain cannot be removed completely without damage to the brain. And this allowed the orbital cavity to create the space for eye to return into the orbital cavity. And once we have achieved that, a titanium mesh was used to separate the orbital cavity from the cranial cavity. After the operation, the patient has shown a lot of improvement. The eye has more or less gone back into its original position where it should be. She also still requires some further operations to fine tune and improve her further, but her confidence levels have increased tremendously, and now she is able to go to her office and do her work with the confidence that is required of her, and she is very happy, and of course that makes us all happy as well. 3 महीने मेरी सर्जरी को पूरे हो गए हैं. सर्जरी के बाद से मैं आई स्टार्टेड मोर फीलिंग सेल्फ लव, एम्ब्रेस माई सेल्फ, एंड जो ये चीज़ आज मैं कर रही हूँ, ये मेरा बेस्ट वर्जन है. आई कॉन्टीन्यूसली ट्राई कि बेस्ट वर्जन मैं और दे सकूँ. इसमें एक चीज़ मैं बात और बोलूँगी, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहता है. बीइंग अ डिसेबल्ड चाइल्ड, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं करा है किसी चीज़ के लिए. दे ऑलवेज पुट अ करेज इन मी दैट बी अ वॉरियर, जा लड़ दुनिया से, ऐसी कोई तुझे चीज़ नहीं है जो तू नहीं कर सकती. हर चीज़ के लिए उन्होंने मुझे कैपेबल बनाया, चाहे कहीं पे भी वो घूमना हो, जाना हो, कुकिंग हो. आई कैन डू एनी डैम थिंग जो मैंने सोच ली, और वो बोलते हैं कि तू हर चीज़ कर सकती है, तू कर, हम तेरे साथ हैं. अच्छा, सोशलाइज होने के लिए भी कभी मुझे पेरेंट्स ने मना नहीं करा कि नहीं सोशलाइज नहीं होना. कभी कभी होता है बहुत सा, जब प्रॉब्लम होती है तो नहीं ऐसा मत करो, वैसा नहीं करो, ये नहीं पहनो, वो नहीं पहनो. दे पुट अ सच अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन मी एंड जा लड़ दुनिया से. सो टुडे आई एम हेयर. बी courageous, be strengthful, and be a warrior to fight with the disease. I really want to show the gratitude towards the team of Medanta. जो सेल्फ एस्टीम की बात है, वो सेल्फ एस्टीम आज मुझ में पहले से बहुत ज़्यादा है. मैं सेल्फ लव बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ, एंड बी अ बेस्ट वर्जन ऑफ मी.